हेलो 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 माइक चेक। हेलो 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 माइक चेक। हेलो 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 माइक हेलो 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 माइक चेक। हेलो 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 माइक हेलो माइक चेक। हेलो 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 माइक हेलो। हेलो दोस्तों, शुभ संध्या, गुड इवनिंग। जैसा कि हम लोग अभी डिट्रॉय गेम खेल रहे हैं और कल के गेम में हम लोगों ने बहुत कुछ गवाया है, अपने बहुत सारे लोगों को गवाया है। हमने कारा को गवाया है, छोटी सी प्यारी सी बच्ची एलिस को गवाया है, मार्कस की सबसे क्लोज फ्रेंड को गवाया है, और भी ना जाने बहुत सारे एंड्रॉयड्स को भी गवाया है। क्योंकि ये दुनिया में जब भी कोई डिफरेंट होता है, जब भी कोई अलग होता है, तो उसको अपना हक लेने के लिए जो है काफ़ी कुछ खोना पड़ता है। जैसे कि अभी के टाइम पे आप देख सकते हैं, इसराइल फिलिस्तीन का वार, यूक्रेन और रसिया का वार। तो चलिए अब शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्या एंड्रॉयड और इंसानों की जंग में जीत किसकी होती है। क्या एंड्रॉयड लोगों को जस्टिस मिलेगा? क्या एंड्रॉयड लोग जीत सकते हैं? क्या एंड्रॉयड लोगों को जस्टिस मिलेगा? क्या एंड्रॉयड और इंसान मिल के साथ रह सकते हैं? तो चलिए शुरू करते हैं। नवंबर 10, 7:31 शाम के। सी कार्ल, मार्कस आया है। Alarm deactivated. Welcome home, Marcus. मार्कस अपने मालिक के घर आया है। आया क्यों है वो देखना है। Hi, Dad. I'm getting out of the hospital tomorrow. They told me that you stayed with me while I was asleep. I, I'm really sorry about everything that happened. I'm gonna stop all that shit. It messes me up. It turns me into somebody I hate. Hey, I'd like to come by and see you tomorrow, if that's alright with you. I just want to let you know, I'm proud to be your son. ही तो ये बोल रहा है कि हमको बहुत गर्व है कि हम आपके बच्चे हैं, है ना। खैर, देखते हैं और क्या क्या होता है। यहाँ पे पियानो भी है। ये वर्किंग एरिया इनके मालिक का, ये मार्कस के द्वारा बनाया गया पेंटिंग है जो मार्कस ने बनाया था। और ये पर्दे के पीछे ही जो है इसके मालिक पेंटिंग किया करते थे, मतलब पर्दे को हटा के वहाँ पे पेंटिंग किया करते थे।
इस मशीन के मदद से वो ऊपर कुर्सी से, तो यहाँ पे तो अभी कोई है नहीं। ऊपर जाके देखते हैं, शायद ऊपर में कोई। वैसे मार्कस यहाँ पे आया क्यों है? वो कार अपने मालिक को देखने के लिए आया है मार्कस। अब वो हैं कहाँ, पता नहीं कैसे हैं, क्या है। काफ़ी दिन हो गए मार्कस को भी उनको देखे हुए। Who are you? How did you get in? I need to see Carl. Carl isn't seeing anyone. You need to leave. Please. I need to see him. He's very weak. I'm not sure he'll be able to talk to you. फिर भी इसको अपने बच्चे की जैसे मानते हैं, तो ये बात है। Marcus, I was hoping you'd come. I missed you so much, Carl. You don't know how much I miss you. What's wrong, Marcus? You taught me everything I know, but I wasn't prepared for this. I thought we would win because our cause was just. I realized just how wrong I was. World is ruled by fear, Marcus. Fear of others. Fear of the future. It's like me, too old. It's time for a damn. ये कन्वर्सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसको समझिए। Well, what should I do? Carl, they're killing my people. I don't want to answer violence with violence, but tell me, what choice do they give? Being alive is making choices between love and hate, between holding out your hand or closing it as a fist. I don't have any easy answers, Marcus. You have to accept the world as it is, or fight to change it. You're my son, Marcus. Our blood isn't the same color, but I know part of me is in you. When the world falls into darkness, दोनों की बॉन्डिंग देखिए। some men have the courage to lead it out. You're one of those men. Face the abyss, but don't let it consume you. ये कन्वर्सेशन के बाद मार्कस को बहुत ही ज़्यादा इमोशनल सपोर्ट मिला है। The previous Connor failed its mission. You're going to replace it. You know what you have to do, don't you? Destroy the leader of the Deviants. Go, Connor. Don't disappoint me. अपने लोगों के पास मार्कस आ चुका है। अपने ऑनर से मिलके इसको काफ़ी इमोशनल सपोर्ट मिला होगा। इसके ऑनर ने कहा भी कि ये दुनिया जो है डर पे चलती है, भविष्य का डर, ताकत का डर, डर ही डर है पूरी दुनिया, सामना करना होगा।
लोगों को बताना होगा कि हम लोगों को भी हक चाहिए। ये कन्वर्सेशन भी बहुत इम्पोर्टेंट होगा, सारे एंड्रॉयड को जगाने के लिए बहुत ज़रूरी है। मार्कस के पास दो रास्ता है, या तो वो इंसान और एंड्रॉयड के बीच में जंग में कूद जाए, या फिर हमेशा के लिए छुप जाए और गिव अप कर दे, और ऐसे ही जो है जब तक मौत नहीं आ जाती है तब तक अपने और बाकी साथियों की मौत के दिन गिनना शुरू कर दे, या फिर आगे आए और इंसानों से अपना हक मांगे। लेकिन इसमें रिस्क बहुत ज़्यादा होगा। हो सकता है इसमें जैसे बाकी पहले एंड्रॉयड की मौत हुई है वैसे और भी हो। जब तक इंसान ये एक्सेप्ट नहीं करेगा कि मशीन जो कि अब बिल्कुल हम लोगों के जैसा स्पीसीज बन चुका है, बल्कि हम लोग से भी ज़्यादा इंटेलिजेंट स्पीसीज बन चुका है, इंसान का ये एक्सेप्टेंस बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है और उसको ये एक्सेप्ट करने में थोड़ा टाइम तो लगेगा। लेकिन यही एक रास्ता अकॉर्डिंग टू मी मुझे लगता है कि सही होगा कि इंसान को जो है ये ग्रांटेड ये ले नहीं रहा है इसको, लेकिन समझाना होगा। अब देखते हैं क्या होता है। North meant everything to me. She'd have given me her life. There wasn't a thing you could do. Now we have to make sure she didn't die for nothing. If it weren't for you, I'd be dead. Thanks to you, I might see her people free one day. You and I haven't always agreed, but I know that we're fighting for the same thing. Whatever you decide, I'm with you, Marcus. मार्कस की सबसे करीबी दोस्त नॉर्थ भी जो है कल उसका भी डेथ हो गया, जो कि आप लोग देखे थे। मार्कस भी कुछ नहीं कर पाया। तो इतने लोगों का सेक्रीफाइसेस हुआ है, तो ये सेक्रीफाइसेस का कोई आउटपुट अच्छा होना चाहिए। नहीं तो जब तक सारे एंड्रॉयड ख़त्म नहीं हो जाएंगे तब तक इंसान रुकेगा नहीं। इसलिए हम लोगों को जो है इंसानों को बताना होगा, आवर ब्लड इज डिफरेंट बट आवर इमोशन इज सेम एंड वी कैन लिव टुगेदर। Humans have decided to exterminate us. Our people are packed in camps right now, being destroyed. Time has come to make a choice. One that very well may determine the future of our people. I know you're all angry. And I know you want to fight back. But I assure you violence is not the answer here. We are going to tell them peacefully that we want justice. And if there's any humanity in them, they will listen. And if not, others will take our place and continue this fight. Are you ready to follow me? जैसा कि अभी आपने मार्कस का
कन्वर्सेशन सुना, स्टेटमेंट सुना। एक्चुअली मार्कस की जगह पे मैं ही तो खेल रहा हूँ ना, तो ये डिसीजन मेकिंग गेम है। मुझे जो सही लगेगा मैं वही चलूँगा, मैं वही खेलूँगा, मैं वही प्ले करूँगा। तो ये मेरे पर्सपेक्टिव से मार्कस सारा काम कर रहा है। हो सकता है आप में से कोई जब ये गेम को खेले तो आपका कोई डिसीजन और हो। दिस इज़ माय पर्सनल चॉइस। मुझे ऐसा लगता है, जैसे कि मार्कस ने कल भी कहा था कि आँख के बदले आँख अगर करेंगे तो ये दुनिया पूरी अंधी हो जाएगी। तो ऐसा मुझे लगता है कि मार्कस का यह रास्ता बहुत ही ज़्यादा डेंजरस, रिस्की है। हो सकता है कि सारा एंड्रॉयड का एग्जिस्टेंस भी ख़त्म हो जाए, लेकिन इसके अलावा बिलीव मी, इंसान को जितना ज़्यादा मारा जाएगा वो और ज़्यादा भड़केंगे, वो और ज़्यादा जो है एंड्रॉयड को समझने में उनको और ज़्यादा जो है दिक्कत होगी। इसीलिए मर के अगर होगा तो उसको बताना होगा इंसानों को कि हम लोग भी आप लोग के जैसे ही एक स्पीसीज इस दुनिया में आए हैं। इट मे बी ये जो है इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू एक्सेप्ट, बट दिस इज द ट्रूथ। अब देखते हैं आगे क्या होता है। At 6 a.m. this morning, a national curfew was declared. Civilian movement will be strictly controlled. The right to assembly is suspended. All electronic communications are restricted, and I have granted enhanced powers to our security agencies. In addition to these measures, all androids must be handed over to the authorities immediately. Temporary camps are being set up in all our major cities to contain and destroy them. I am now asking all civilians to cooperate with the authorities and rest assured that everything in our power is being done to guarantee the security of our nation. Please! Madam President! Please! Is it true that the androids could hack our IT systems, like nuclear power plants and military bases? All androids working on sensitive sites have been neutralized, and all IT systems have been suspended to avoid any risks of hacking. The situation is under control. Madam President! A convoy of medical cobalt is reported missing. Army weapon stores are also said to have been robbed. Can you confirm these reports? I have no information on that at this time. Madam President! Has the leader of the Deviants been apprehended? The deviant that is known as Marcus has not been located yet, but we will soon track it down and neutralize it. Madam President! Madam President! Please! What's gonna happen to CyberLife? Will androids be banned definitively? We're working very closely with CyberLife to neutralize all deviants. I won't make any comments about anything else until we've dealt with the android question. Thank you. That will be all. We're coming to you live from Detroit, where thousands of androids are marching through the city at this very moment. The leader of the Deviants, the one they call Marcus, is at the head of the march. Something's happening in Detroit, Madam President. नवंबर 11, 2038। जैसा कि अभी आप सभी ने देखा, मैडम प्रेसिडेंट ने जो है मार्कस को न्यूट्रलाइज करने का ऑर्डर दे दिया है, मतलब ख़त्म करने का ऑर्डर दे दिया है। अब मार्कस खुद जो है मार्च में सबसे आगे है। सबसे पहली जो गोली चलेगी वो मार्कस पे ही चलेगी, लेकिन फिर भी मार्कस जो है गोली खाने के लिए तैयार है, क्योंकि उसे भी इंसानों के जैसा बाकी एंड्रॉयड के साथ जो है राइट चाहिए। वो अपने लिए नहीं, बाकी और एंड्रॉयड के लिए भी वो राइट चाहता है। उसे इंसानों से कोई दुश्मनी नहीं है, वो बस इंसानों के साथ जैसा व्यवहार होता है वैसा वो भी अपने साथ व्यवहार चाहता है, और बाकी एंड्रॉयड के लिए भी वो व्यवहार चाहता है। लेकिन क्या इंसान ये एक्सेप्ट करने के लिए रेडी है अभी कि एक मशीन जिसको उसने बनाया है, भला वो उन लोगों के सामने आके कैसे उन लोगों से राइट मांग सकता है? कैसे वो उसके चॉइस के लिए उसको माफ़ कर सकता है? यही देखना है, देखते हैं।
Here we are. The moment of truth. चारों ओर सेना है। We don't want confrontation. We are protesting peacefully. I repeat, surrender now, or we will open fire! There's no turning back now. We ask that you release all androids detained in camps and cease all aggression against us. We are peaceful. We will not resort to violence. But we are not leaving until our people are free. Are you gonna open fire on unarmed protesters? हाँ, सही बात है। All teams, hold your fire! शर्म लग गया इन लोगों को। Yes, Michael, we are less than 100 meters away and events are unfolding as we speak. We will continue to bring you live updates. Josh Douglas, Channel 16. Michael, back to you. What are we gonna do now, Marcus? We hold out. As long as we can. कॉर्नर आ गया अपना मिशन को पूरा करने के लिए। देखते हैं क्या होता है। 5 vantage point 11:01 रात्रि के। ए यार स्नाइपिंग करेगा। ये तो मार्कस को मार दे। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं तो कभी नहीं चाहूंगा कि मार्कस मरे। लगता है मार देगा क्या? ये कहा एंडरसन? लेफ्टिनेंट। Shouldn't do this, Connor. Keep out of this, Lieutenant. It's none of your business. You're gonna kill a man who wants to be free. That is my business. It's not a man. It's a machine. That's what I thought for a long time, but I was wrong. Deviant's blood may be a different color than mine. सही बात है। They're alive. बिल्कुल, खून अलग है, लेकिन ये लोग भी जो है अलाइव है, क्योंकि ये लोग भी मौत से मरने से डरता है। I have a mission to accomplish, Hank. It's best if you just stay out of this. Step away from the ledge. आज तो एंडरसन भी फुल मूड में लगता है।
Go home, Hank. You can still save your life. I'm faster than you, and I don't feel pain. You don't stand a chance against me. You know, ever since Cole died, I've been nothing but a coward. Just wanted to destroy myself. Lost track of the man I was. But you know what? You don't fucking scare me, Connor. I remember who I am now. Come on. यार I दोनों know what happened to your son, Hank. It wasn't your fault. A truck skidded on a sheet of ice and your car rolled over. Little Cole had just turned 6. Shut up! Don't you talk about my son! He needed emergency surgery, but no human was available to do it, so an android had to take care of him. Poor Cole didn't make it. An android killed your son, Hank, and now you want to save them? No. Cole died because a human surgeon was too high on red ice to operate. अच्छा All this time I blamed androids for what happened, but it was the humans' fault. मतलब एंड्रॉइड का फॉल्ट Him नहीं in this fucked up world where the only way people can find comfort is with a fistful of powder. Killing you is not part of my mission. I'm glad to have met you, Hank. I hope one day you can get over what happened to your son. कॉर्नर छोड़ दिया बस तो यही डेरा लगा लिया है We've got to finish the barricade. Come on, help me. चाहे मार उठे या बाबा मैंने तो हाँ कर ली होल्ड बैरिकेड Hey, help me! Right, that should do it. I know it was not an easy decision to make, ये बात तो है but I'm sure we're doing the right thing. Are you alright? I shot into the crowd. Many of us were killed. It could have been me. I'm scared. I don't want to shut down. देखा आपने इसका कन्वर्सेशन सुना ये मरना नहीं चाहता We're here because we never want to feel that fear again. Because we're more than what they say. That's what our people died for, right? That's why we're here. जब मशीन मरना नहीं चाहता है
वो भी जीना चाहता है, तो इसको आप कैसे मसीह मान सकते हैं? इसके अंदर इमोशन है, खून है इंसानों के जैसे, इंसानों के साथ रहने लगा है। धीरे-धीरे ये सब कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ये बेहतरीन एक डिस्कवर है। इंसान के साथ रहते रहते इसमें भी जो है इंसानियत सीखनी है। They defies president warrant to make state visit की vetted। यार कारा लोग चली गई ना, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। ये लोगों को देखो धीरे धीरे आगे आ रहा है। It won't stop there. What are we gonna do if they attack? Resist. That's the only thing we can do. Marcus, we found what you asked for. There's some journalists over there. We have to make sure they know what's going on. एकता चाहिए, हम लोगों को समानता चाहिए। Marcus! Marcus, come look! Marcus? Come to talk to you, Marcus. Come on. You have my word. We won't try anything. Don't go. It's a trap. I'm unarmed, Marcus. I just want to talk. काफी कलेजा चाहिए उसके पास जाने के लिए, मार भी सकता है। I need to hear what he has to say. What if they kill you? And that's a chance I'll have to take. In a few minutes, troops will be ordered to charge. None of you will survive. It'll all be over. You can avoid that, Marcus. What do you mean? Surrender. Surrender, and I give you my word, your life will be spared. You'll be detained, but none of you will be destroyed. अपने लोगों को धोखा देके? You asking me to betray my people? I am offering you the chance to save your people. You're not walking out of here, Marcus. The only thing you can save now are the lives of those around you. What happened to the other androids demonstrating in the camps? Unfortunately, there were no journalists around to help save them. You're it. सिर्फ जर्नलिस्ट और पेपर वालों के डर से ये अभी कुछ नहीं कर रहा। I'm not afraid to die. If I have to give my life for what I believe in, then I won't have lived in vain. You can be free, Marcus. To live among the humans. You could have what you've always dreamed of. The lives of your people. Freedom for you.
All you have to do is say the word. I'd rather die here than betray my people. Well, you just signed your own death warrant. डेथ वारंट तो सारा एंड्रॉयड लेके आया है, क्योंकि वो निहत्था आया है, आप लोग के जैसा गोली बंदूक के साथ नहीं आया है, अपना सर पे कफन बांध के आया है। जस्टिस या तो इक्वालिटी चाहिए या फिर मार दो। What happened, Marcus? What did he say? The humans are about to launch an attack. And we will show them. And we are not afraid. If we must die today, then we will die free. We're interrupting this news bulletin to bring you the latest news live from Detroit. Joss? Yes, Michael. The army has just launched an attack on the barricade, despite the fact that the deviants were protesting peacefully. Have apparently decided to put an end to the deviants' रेस वाला demonstration by टीवी force वाला this सही time. बता रहा है। Thanks, Michael. Back to you in the studio. Wait a minute. Something's happening. Hold on just a little while longer. Hold on just a little while longer. Hold on just a little while longer. Everything will be alright. Everything will be alright. Fight on just a little while longer. Fight on just a little while longer. Pray on just a little while longer. Incredible. The deviants. The deviants are singing. Everything will be alright.
Sing on just a little while longer. Sing on just a little while longer. Sing on just a little while longer. Everything will be alright. Everything will be alright. मैडम Tell प्रेसिडेंट them to stand down. It looks like... Yes, the military is withdrawing. These images of deviants singing in the face of death are being seen all over the planet. Surely deviants are just defective machines. Or are they a new form of life, one that we refuse to acknowledge? When we watch footage of androids facing down the barrel of a gun, we can only speculate as to whether they simply simulated fear and courage, or whether they didn't really feel these emotions. President Warren is said to have intervened personally to spare the androids. The peaceful demonstration of the deviants and the dignity of Marcus, their leader, has won them sympathy from parts of the population. That is why I have called for the android destruction to be suspended until further notice. I have also ordered a Senate Select Committee to review the facts, establish contact with the deviants, and determine if they can be considered as a new form of intelligent life. Today, our people finally emerged from a long night. From the very first day of our existence, we have kept our pain to ourselves. We've suffered in silence. And now the time has come for us to raise our heads up and tell humans who we really are. To tell them that we are people too. Corner. In fact, we're a nation. A nation that has earned the right to live in freedom. And today begins the most challenging moment in our fight. Connor, what are you doing? Obey, that's an order. I can't do that! I see. Moral objections. We knew there was a risk you'd be compromised. Which is why we'd always planned on resuming control of your program. Resume control? You can't do that! I'm afraid I can, Connor. You needn't have any regrets. You did what you were designed to do. You accomplished your mission. मतलब मार्कस मर जाएगा. अभी मार्कस दूसरा दुनिया में पहुंच गया. There's got to be a way. Find a way out. By the way, I always leave emergency and summer programs. Never know. ये तो कावासाकी का आवाज था. एक एग्जिट प्रोग्राम तो होता है. Humans are both our creators and our oppressors, and tomorrow, we must make them our partners. Maybe even one day our friends.
But the time for anger is over. Now we must build a common future based on tolerance and respect. We are alive! And now, we are free! दोस्तों, ये है कहानी डिविएंट की। ये है कहानी एंड्रॉयड वर्सेस ह्यूमन बीइंग्स की। ये है कहानी डिट्रॉयट बिकम ह्यूमन की। ये है कहानी जाति की। दोस्तों, ये कहानी तो खत्म हो गई, मगर अभी बहुत सारी कहानी तो आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं हम सभी लोग कल।